After independence, our world got divided into two different worlds. One picked up the pace of change, and one was left behind. One explored, and one was tucked away in remote corners. But when one woke to a headline, the other was the headline. Kalu is a farmer. He has 4 acres of land and yet could not provide for his family. मेरे खेत में पत्थर का प्रॉब्लम था। पत्थर बहुत था तो कुछ काम उसमें होता नहीं था। Farmers like Kalu migrate to seek work as laborers. If Kalu had to be away, his children were to work in the fields by dropping out from their school. खेती में फसल नहीं होते थे। जो पानी गिरते थे तो पानी रुकते नहीं थे खेत में। वो पानी बाहर निकल जाता तो मट्टी लेके जाता था पूरा। जंगल जैसा गांव था, हमारे को कुछ अनुभव नहीं था, कुछ भी जानकारी नहीं। माँ और मैं रहती, मजूरी काम करती, मजूरी भी ठीक से नहीं मिलती थी। फिर हमारे साथ बहुत सा ऐसा कुछ भी होता था, लेकिन हमें पता नहीं चलता था कि हमारे साथ अत्याचार हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, या सही है या गलत है, ऐसा कुछ भी पता नहीं था। We at EFICO have taken this forward and responded to his call by working with these people from the root to the shoot. We have schooling programs for children as well as adults. We impart knowledge to improve skills so that Kalu can make his land fertile. Farmers like Sunanda who have no land are provided with goats for a source of steady income. We enable people like Sitaram to set up shops so that they too can stand on their feet. By creating awareness on key issues, we link them to their privileges from the government. We train the key people to strengthen the government's existing work. EPICO के साथ 2011 के जुलाई से जुड़ी हूँ। हमारे काम बोले तो गर्भवती माता, स्तनदा माता और ये छोटे बच्चों पे है। We bridge the gap between the government and the communities through networking. EPICO was allotted this IC work because they were working for the rights of people, rights of village development committee, rights of NREGA worker. Due to their efforts, we could implement this MG NREGA in better way. EPICO ने हमें सचमुच का बहुत साथ दिए है और बहुत मदद दी है ये काम करने के लिए और ऊपर उठने के लिए। नहीं तो हमारे इस जंगल में कोई नहीं था, कोई मदद करने वाले नहीं है और हमारा विकास अच्छी तरह चल रहा है और हमारे काम सही चल रहे हैं और हमारे गांव ऊपर उठने में आ गए हैं। And finally, ensure that they continue to work towards their progress.
एपिकोर ने हर प्रकार का ट्रेनिंग देके उन्होंने हमको ऐसा काबिलियत बनाया। हमने एक समिति बनाया 20 लोगों का, कोरकू बहुउद्देशीय संस्था करके उसका रजिस्ट्रेशन करवाया। और आगे हम भी एपिकोर के तरह ही हमारे कोरकू लोगों का सेवा करने के लिए, फिर उनका मार्गदर्शन करने के लिए आगे बढ़ेंगे। We need you to come forward and work with us to reach such people. Join us in defending the weak and upholding the cause of the poor and the oppressed. As we work towards providing food security to the people by changing the dry land to a fertile land. Be a blessing to millions. Call us on the numbers on the screen and we can guide you on how you can partner with us. Visit our website for more information. For together, we can rewrite the headlines of tomorrow.